So here students, here is the answer for the chapter 3 synthetic fiber and plastics for class 8th. Question number 1, explain why some fibers are called synthetics. Okay, now look at the answer. Some fibers which are not natural man-made fibers are called synthetic because they are made from chemical processing. Okay, they are made by chemical processing of petrochemicals. Synthetic fibers are made of very large unit called polymers. Some of the synthetic fibers are rayon, lion, acrylic जोटा आम पढ़ी है सिंथेटिक फाइबर कहीं कहुए कहीं से सब एगुड़ाक मेनली कौन मैन मेड by the chemical processing of petrochemicals. Synthetic fibers are made up of very large units of polymers. Okay, so it is the answer. Now let's see the question number 2. Mark tick the correct answer. Here is the option. Rayon is different from synthetic fiber because it has a silk appearance. It is obtained from the wood pulp. Its fibers can also be woven like those of natural fibers. So answer is B. That is, it is made obtained from wood pulp. तुमको मु आगु बुझाई रेयन केमती ताको wood pulp को पेस्ट करिकी सेलुलोज को प्योर करिकी सेगुडी को ऑब्टेन करा जाए wood pulp रु. तेणु rayon is different from synthetic fibers because it obtained from wood pulp. Okay, so next time देखिए question number 3. Fill in the blanks with appropriate words. Synthetic fibers are also called dash or dash fiber. So synthetic fibers are also called man-made or artificial fiber. सेटा मनुष्यकृत बा कृत्रिम नहीं कि बी होची सिंथेटिक फाइबर्स आर synthesized from raw materials called कौन सी आंसर petrochemicals. C, like synthetic fibers, plastic is also a polymer. Okay, so plastic is also a polymer. It combination of monomer बहुत गुड़े मोनोमर यूनिट को मिसेक से गुड़ी को पॉली माने मेनी तुमको बतई दिले आगु. सो क्वेश्चन नंबर 3 गला. क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा कोन अछि. गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रांग. किछि एग्जांपल हमें देखैबा जा द्वारा कि नायलॉन फाइबर गुडी को वेरी स्ट्रांग बोली कहै छै नै कि. नायलॉन इज वेरी स्ट्रांग फाइबर. That is why nylon is used for making parachutes, rock climbing. चित्र देखिथिलो rock climbing ropes, fishing nets, seat belts, car seat belts तुमको बुझेइथली. A nylon thread is elastic and light but actually stronger than a steel wire. नहीं कि एटा steel wire टू मध्ये strong होई थाए नहीं कि. तापर क्वेश्चन नंबर 5 को जिबा. Explain why plastic containers are favored for storing foods. Plastic container गुड़ी को कौन पाई storing food विभिन्न प्रकार खाद्य द्रव्य आमे सेठे रखू कौन पाई नहीं कि. Plastic containers are favored for storing food for the following reasons. यही सब कारण जो कौन कौन. Plastic containers are very lightweight, so they are easy to handle. से गुड़ी को lightweight कम वजन हल्का नहीं कि. The price of plastic containers is very less as compared to the other containers. अन्य धातव पदार्थ तैयारी कंटेनर गुड़ी को अपेक्षा प्राइस ऑफ प्लास्टिक कंटेनर प्लास्टिक रो तैयारी हेतिबा कंटेनर गुड़ी को सस्ता. दे हैव गुड स्ट्रेंथ. समान तार प्लास्टिक रो स्ट्रेंथ मध्ये अधिक थाए पड़िले भी भांगे नै. हार्ड प्लास्टिक गुड़ा को प्लास्टिक कंटेनर्स आर ड्यूरेबल मध्य नहीं कि. ड्यूरेबल माने बहुत दिन पर्यंत लास्टिंग करे. ड्यूरेशन रु ड्यूरेबल आसिला. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 कौन अछि देखो. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ए
विषय में तुमको आगु कही। सो यू कैन डिफरेंशिएट इट। Thermoplastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics, नहीं कि जोटा कि हिटिंग कले सेटा तरली जाए सेगुड़िक कौन कहती थर्मोप्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स which when molded once cannot be softened by heating, these are called thermosetting plastic। गोटे थर ताकू मोल्ड कला परे इट कैनॉट बी सॉफ्टेन। आम कौन साधारणतः थर्मोप्लास्टिक गुड़िक हिट कला परे पुणी ठंडा कले तार ओरिजिनल सेप पड़े आसे, किंतु थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रे सेमती हुए नहीं। एग्जांपल आम कौन दमा पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी आर सम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। आउ एग्जांपल्स ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रे आम बेकेलाइट आउ मेलामाइन नेबा। पुणी देखा थर्मोप्लास्टिक रे कौन दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स। बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। जेम तुम देखुच यूटेंसिल गुड़ाक तुम किचन रूम रे जो व्यवहार करुक कौन बेकेलाइट रे तैयारी होइछि। मेलामाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। फ्लोर टाइल्स माने फ्लोरिंग करूछु टाइल जो पकाउछु सेटा, किचन वायर्स एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर, नहीं कि से आम एग्जांपल नहीं जो कोट्स गुड़ाक फायरमैन गुड़िक फायरमैन माने जो पिंधती से गुड़िक मेलामाइन रे तैयारी होता है, नहीं कि। सो नेक्स्ट देखिए आम क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स। सस्पेन हैंडल्स, आम सस्पेन हैंडल्स गुड़िक कहीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रे गढ़ा। पुणी इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच प्लग्स, बोर्ड सेगुड़िक कहीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रे तैयारी। तुम ये विषय आगे भी पढ़ी लेबे। मेलामाइन ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर दैन अदर प्लास्टिक, सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सस्पेन हैंडल्स विच रेजिस्ट फायर, नहीं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हीट को बहुत टॉलरेट करे, रेजिस्ट करे, सडनली तरल नहीं। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गोटे अच्छी ए पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल प्लग, स्विच प्लग, बोर्ड एगुड़िक आम बेकेलाइट तैयारी होता जिनस देखु नहीं कि कहीं पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुए नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिबा। कैटेगराइज द मटेरियल ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैनॉट बी रिसाइकल्ड। कोटा नवीकरण योग्य बा नवीकरण योग्य तो कही पारे ना, आम रिसाइकल कोटा आम पुनर्चक्रण हो पार। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, प्लास्टिक टॉयज, कुकर हैंडल्स, कैरी बैग्स, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक बॉल्स, plastic covering on electrical wires, plastic chairs and electrical switches are given. So plastic toys, carry bags, ballpoint pen, plastic balls, plastic covering on electrical wires and plastic chair cannot be recycled as there are these are कौन thermoplastics, नहीं कि can be recycled एगुड़िक पुनर्चक्रण करहब, किंतु टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, कुकर हैंडल्स एंड इलेक्ट्रिकल स्विच कैनॉट बी रिसाइकल्ड as these are thermosetting plastics. Once it is molded cannot be come to its original shape, नहीं कि। क्वेश्चन नंबर 9 देखिबा। राना wants to buy a shirt for summer. Should he buy cotton shirt or shirt made from synthetic fiber? Advise Rana giving your reason. कौन करची राणा वांट टू बाय सार्ट्स फॉर समर। खरा दिन होची राणा सी सार्ट गोटे किणवाई जाइए साइड सार्ट सी किणव मेड फ्रॉम कॉटन और सिंथेटिक मटेरियल्स। राणा इज एडवाइज टू बाय कॉटन सार्ट, निश्चित सी कॉटन सार्ट किणव नहीं कि फॉर समर बिकॉज cotton absorbs the sweets and person in cotton allow easy evaporation and keeps our body cool.
कटन गुड़िकर काम है सेगुड़िक इजी इवापोरेशन कर आम बॉडी को ठंडा सी दिए व्हेयर सिंथेटिक सार्ट डज नॉट ऑब्जर्व स्वीट्स आमर सिंथेटिक जो टेरिलिन टेरिकट एगुड़िक जो सार्ट गुड़िक से कौन करे सी स्वेट बा झाड़ को ऑब्जर्व करे नहीं दे आर भेरी अनकंफर्टेबल टू वेयर इन समर समर सेगुड़िक अनकंफर्टेबल माने देह नहीं कि क्वेश्चन नंबर 10 देखिबा गिव एग्जांपल टू शो दैट plastics are non-corrosive in nature non-corrosive plastic corrosive कलंकी खाए नहीं we can store various kind of chemicals and other materials in plastic container because they are non-reactive and does not react with water and air माने सेगुड़िक जल सहित किंबा एयर सहित वायु सहित रिएक्ट करे नहीं प्लास्टिक गुड़िक टेफ्लॉन a kind of plastic is used as coating to manufacture non-stick cookware. Bakelite is poor conductor of heat and electricity, so it is used for making electrical switches and handles of the utensil, as we have discussed earlier. Okay, melamine is used for making floor tiles, kitchen wires, shards of the firemen. Okay. Question number 11. Should the handle and bristles of the toothbrush be made of same materials? Explain your answer. देखो पिले ये सो ये देखिए आम द ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश ब्रिसल्स माने जो दांत तुम घस से जो तार भाया होता है ना कि जोटा दांत आमर घसी हुए ब्रिसल्स आउ हैंडल्स तुम जान ब्रश हैंडल टूथब्रश हैंडल्स शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स सो आज दैट डज नॉट हार्म द गम्स एंड हैंडल्स शुड बी मेड ऑफ हार्ड मटेरियल्स सो दैट इट कैन गिव ए फिर्म ग्रिप तार ब्रिसल्स गुड़िक टूथब्रश ब्रिसल गुड़िक शुड बी सॉफ्ट मटेरियल्स देयरफॉर ब्रिसल्स आर मेड ऑफ नाइलॉन फाइबर्स which are strong, elastic, lustrous, light weight. से गुड़िक हल्का होता है इलास्टिक थाए तुम घसले से फ्लेक्सिबल होता है एंड इजी टू हैंडल नहीं कि हैंडल इज मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक तार जो टूथब्रश हैंडलटा से हार्ड प्लास्टिक रे तैयारी आज इट इज स्ट्रंग ड्यूरेबल पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एगुड़िक स्ट्रंग हवा दरकार बेसी दिन लास्टिंग करवा दरकार तेणु टूथब्रश ब्रिसल्स आउ हैंडल्स are made up of soft material and hard plastic नहीं कि सेगुड़िक सब ब्रिसल्स गुड़िक मेड अप ऑफ नाइलॉन फाइबर्स आउ हैंडल इज मेड अप ऑफ हार्ड प्लास्टिक क्वेश्चन नंबर 12 को जिबा एवॉइड प्लास्टिक्स as far as possible कमेंट ऑन दिस एडवाइस तमे ए भितर मध्ये गोटे लेखाटे लिखि परिबो एवॉइड प्लास्टिक्स as far as possible आमे प्लास्टिक को व्यवहार अति कम करवा दरकार नहीं कि nowadays plastics becomes very important in our daily life even though we should avoid them as far as possible as for the following reasons पाई ये जो तले दिया जाइथबा केते रीजन मु कहूची सेति पाई हम प्लास्टिक को अवॉइड करिया दरकार नहीं कि plastics are non biodegradable and take a lot of time to decompose. First of all, plastics are non-biodegradable. सेगुड़िक बायोडिग्रेडेबल नुहे कहीं सेटा कौन सी बैक्टेरियल द्वारा ताको आम जब खत गातर पकईदे सी डिकम्पोज बा अपघटित हो पारे नहीं बा माटी मिसा को बहुत समय लगे नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक्स आर नॉट इको फ्रेंडली सेगुड़िक आमर फ्रेंडली इको फ्रेंडली नहीं एनवायरमेंटल फ्रेंडली नुहे by burning plastics poisonous fumes are released that cause air pollution नहीं कि आमर वायु प्रदूषण करिबारे प्लास्टिक गोटे मुख्य जिनिस नहीं कि तेणु these are not eco friendly sometimes cows and other animals may eat plastics present in garbage which may choke their respiratory systems even cause to death तमे बहुत समय देखिथिबो जे गाई बलद छेड़ी गुड़ा प्लास्टिक जिनस गुड़ा खाई दिखते नहीं कि रेस्पिरेटरी श्वासक्रिया जनित बा पेट भितर जो प्रोसेस आमर
चली थाए सेगुड़िकर सी तार कुप्रभाव पकाए नहीं कि द प्लास्टिक लेफ्ट इन सॉइल रिजल्ट इन सॉइल पॉल्यूशन प्लास्टिक जाको आम माटी रे जदि पकईदेवा ताहले सॉइल बा मृत्तिका प्रदूषण हुए प्लास्टिक बैग्स ड्रेन्ड इनटू वाटर बॉडीज कॉज थ्रेटन टू एक्वाटिक लाइफ आल्सो आमर बहुत समय देखुच नदी झरणा सब समुद्र जाए मिशुची नहीं कि प्लास्टिक बैग गुड़िक जदि समुद्र जाकि पड़ो जलचर जीव मान प्रति यह विपद सृष्टि करे पॉलीबैग्स चॉक्स द ड्रेन एंड सीवेज पाइप्स दस कॉजिंग ए लॉट ऑफ ट्रबल्स नहीं कि आम पॉलिथीन बैग गुड़िक जो यूज करा बड़ बड़ प्लास्टिक गुड़िक जदि पकईदेवा ड्रेन रे से गुड़िक सीवेज पाइप रे जदि पड़गला से गुड़िक बहुत असुविधा करे आउ से गोटे पानी भले जीवा आसवा करे ना ये सब कारण आउ भी बहुत गोटे कारण अच्छी से गुड़िक तुम मन भाविकी लिख सो वी शुड एवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल ओके So next question is question number 13 match the terms of column 1 correctly with phrases given in column 2 हमर दुटा स्तंभ अच्छी column 1 and column 2 आम से मैच करवा नहीं कि सो column 1 रे कौन अच्छी पॉलिस्टर टेफ्लॉन रेयन आउ नाइलॉन column 2 रे अच्छी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प्स तुमको कही कौन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प्स कोटा रेयन सहित सामान हम ना कि रेयनटा यहाँ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प्स तापर यूज्ड फॉर मेकिंग पैराचूट्स एंड स्टॉकिंग नहीं कि पैराचूट यू मान तैयारी करिबारे आमे कौन यूज करू पैराचूट मन पक नाइलॉन नहीं कि नाइलॉन नाइलॉन थर्मोप्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग parachutes तापर देखिबा used to make non-stick cookwares कोटा non-stick cookwares कोटा देख टेफ्लॉन तापर आसला पॉलिस्टर नहीं कि ये पॉलिस्टर कौन आसीबो पॉलिस्टर इज fabrics does not wrinkle easily नहीं कि पॉलिस्टर टामर does not wrinkle easily so आमर आसला पॉलिस्टर fabrics do not wrinkle easily so आम ए देखले पॉलिस्टर टेफ्लॉन रेयन नाइलॉन गुड़िक आम कलम 2 को मैच करदे नहीं कि so it was the answer for question number 13 now let's see the question number 14 manufacturing synthetic fiber is actually helping conservation of forest comment manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forest आमर conservation of forest जंगल सुरक्षा करबा पई synthetic fibers गुड़िक actually help करे कि नहीं कि हम देखिबा synthetic fibers are man made fibers जेहेतु एगुड़िक ये फाइबर बा सूता जो सिंथेटिक फाइबर्स आम करुचे से गुड़िक मैन मेड नहीं कि दिज फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स ये गुड़िक पेट्रोकेमिकल तैयारी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स कटिंग ऑफ ट्री और किलिंग ऑफ एनिमल इज नॉट रिक्वायर्ड एंड वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल एनवायरनमेंट यूजिंग सिंथेटिक फाइबर आम सिंथेटिक फाइबर यूज करिया द्वारा आमर कौन फॉरेस्ट बा जंगलर सुरक्षा आम कर कैन कंजर्व संरक्षण आम जंगल संरक्षण कर नहीं कि कहीं आम वुड पल्प काटिकी तो आम रेयन तैयारी करिपरिबा नहीं कि तेणु सिंथेटिक फाइबर्स गुड़िक आमर बहुत गुड़िए कटिंग ऑफ ट्रीज आउ किलिंग एनिमल फाइबर आम जो नेचुरल फाइबर आम पाऊँ जमती आम काश्मीरी मेढ़ा नहीं कि आगुरी तो बहुत डिस्कसन हो विषय मुझे बेसी किसी तुम कहबिनी सो एनिमल्स मान को किलिंग करवा कटिंग ट्री गछ गुड़ी काटा आमर रही जाए तेणु आम फॉरेस्ट को कंजर्व कले नहीं कि हेन्स मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 15 describe an activity to show that
thermoplastic is a poor conductor of electricity. गोटे एक्टिविटी आम करवा जहाँद्वारा कि आम देख पार कौन thermoplastic is poor conductor of electricity. Take a small piece of thermoplastic material and connect it between the circuit as shown in the figure. नहीं कि when we connect conductor in the circuit, current pass through it and the bulb glow. But if we connect thermoplastics in circuit, no current passes and bulb does not glow. When we connect conductor, जब आम कंडक्टर को आम जदि सर्किट रे नेबा कंडक्टर माने कोटा जोटा सुपरिवाही जमती कपर वायर गुट नेबा सेटा तुम शॉर्ट मारिबो कि नहीं निश्चित शक देव तेणु से आम करेन्ट पास करे नहीं कि किंतु थर्मोप्लास्टिक गोटे नहीं कि आम जब से तार सर्किट रे लगेबा ताले से गुड़िक करेन्ट पास करि परिबो नाही. So when thermoplastic in a circuit, no current passes and both bulb does not glow. Glow माने जलिबा नहीं कि सो तुम देखले जे थर्मोप्लास्टिक कौन ये देख सर्किट रे केमती सेट कराई अच्छी ये बैटेरी अच्छी सर्किट डायग्राम टाक लक्ष्य कर ओके ये करेन्ट फ्लो होपटे बल्ब जलुची ओके यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अच्छी बैटेरी रो सो ये जो आम कंडक्टर देवा कौन से गोटे तार देवा ताले बल्ब ग्लो कर माने इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंतु जिते आम थर्मोप्लास्टिक टे देवा ये टॉयज कहू कम हो तुम जाच यहाँ थर्मोप्लास्टिक विषय सो जिते आम थर्मोप्लास्टिक टे रखा तो बल्ब डज नॉट ग्लो. सो इट this circuit diagram tells us about that thermoplastics are bad conductor of electricity बा thermoplastic टा कुपरिवाही ता द्वारा करंट प्रवाहित तो हो पारे नहीं. ओके स्टूडेंट्स all the questions and answers were discussed so please note down it dear 8th class students. Also 9th class students should see this chapter also so they can understand if they have not read in earlier classes. So it is important for our 9th class and 8th class students to see all these videos which are given to you. Okay, so it is here we completed the synthetic fiber and plastic chapter number 3 for the class 8th class. Okay, so all students of the 8th class first priority is they should do all the answer for the chapter 3. Okay, thank you students.